Waadaplaya concussion sub series, retired out series. कितने मैच हो गए संजय? I think 75 matches के बाद finally we have a winner. And who would have thought in auction table Gujarat Titans will be the IPL 2022 champs? What a performance! They bossed the table, and then they bossed the final. They bossed the qualifier one. Flawless performance, Sanjay. Apart from being a one-sided final, what do you think of Gujarat Titans' journey this year? सबसे पहले तो as we've all mentioned so many times throughout the course of this IPL, किसी ने predict नहीं किया था कि they will even qualify for the playoffs, let alone topping the table, with 20 points, hardly dropping any points through the course of this IPL. Then first game of the qualifiers straight away into the finals and then winning the finals comfortably. Overall, जो भी experts है सबको इन्होंने एकदम गलत साबित कर दिया एंड वी ऑब्वियसली आर नॉट एक्सपर्ट्स बट किसी ने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ये लोग पूरा जीत जाएंगे. दे हैड अ न्यू टीम, न्यूइश टीम, बॉलिंग लाइनअप अच्छी थी इनकी. दे हैड अ कैप्टन जिन्होंने कभी कैप्टनसी नहीं की थी, हार्दिक पांड्या. आशीष नेहरा, पीपल हैव वेरियस ओपिनियंस अराउंड हाउ ही फंक्शंस. पहले भी देखा हमने उनको आरसीबी के साथ. तो आई थिंक ओवरऑल दिस इज गुड फॉर आईपीएल बिकॉज फाइनली वी गॉट अ न्यू विनर besides Mumbai Indians and CSK pretty much winning everything in the last 7-8 years. तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छा है. And if you're fans of any other team who've been playing 14-15 IPLs, RCB, Delhi Capitals, Punjab, they'd be thinking, man, 15 साल हम लोग कोशिश किए नहीं और ये देखो नई टीम आ रही है and they've straight away won it. So yeah, life's looking very good for Hardik Pandya and the Gujarat Titans, and what a brilliant crowd we had. Although as you mentioned, the game didn't live up to a finals billing, but nevertheless बहुत अच्छा IPL हुआ, पूरे crowds आए, and overall I think it was a very good tournament. Excellent. And finals की बात किया जाए तो I think over 1 lakh crowd in Motera. Outstanding. बहुत मजा आ गया मुझे तो atmosphere देख के. And then we had A.R. Rahman performing and Ranveer Singh performing. So did you like the setup initially, like a closing ceremony, or Twitter has a lot of reaction about having a closing ceremony of sorts? क्लोजिंग सेरेमनी अब काफी सालों बाद हो रहा है आई थिंक, क्योंकि होम में काफी सालों बाद 2-3 साल बाद हो रहा है. मैंने मिस कर दिया बट आई डिड सी लॉट ऑफ रिएक्शंस एटसेट्रा. आई मीन closing ceremony probably was the highlight of the day today. But in terms of 104,000 in the in the stadium, something which all cricket fans would have in their bucket list now, because Eden Gardens, yes, 60-70,000 after the restructuring and all that with bucket seats, but 104,000 is definitely something which everyone would look forward to. और मुझे लगता है जब भी इंडिया में कोई वर्ल्ड कप होगा तो फाइनल यही होगा. बिल्कुल बिल्कुल. And then just as a recap, score देखा गया तो Rajasthan Royals won the toss, and we'll talk about it as to why they did what they did. Scored 130 for 9, which was below par total on this page. And Gujarat Titans chased them off in 18.1 overs and won with 7 wickets. Start off, we've always spoken about, and the history says that in a final or a knockout game, win the toss and bat first, which I think Sanju did that because last game they chased, I understand. But in hindsight, is that what probably is the first step he should have thought about, or what did you think, Sanjay? मुझे सरप्राइजिंग दो रीजन की वजह से लगा. एक तो दे जस्ट वन अ गेम अगेंस्ट आरसीबी कमिंग इनटू अहमदाबाद, जिन्होंने एग्जैक्टली दे आरसीबी स्ट्रगल टू सेट अप अ टोटल. 125 पे थे, अगर वो चाहते तो 165-70 आराम से बना सकते थे, बट ऑब्वियसली दे थॉट कि 180-90 पार स्कोर होगा, तो दे वेंट आउट फॉर इट. 157 बना. गुजरात हैड नॉट प्लेड ऑन द सर्फेस एट ऑल. दे केम इनटू अहमदाबाद, दिस इज द फर्स्ट होम गेम. तो मुझे लगा कि मे बी दिल ट्राई द सेम थिंग, बिकॉज गुजरात चेज अच्छा कर दिए. ऑल्दो इन द पास्ट 3 मैचेस व्हिच these teams played, they Gujarat won 2 chasing and 1 defending. तो मुझे लगा कि शायद वो पहले कर सकते हैं, बट इवन देन अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं विद एक्सपीरियंस ऑफ जॉर्ज बटलर, सैमसन, they should have been able to assess quickly कि ये 170-80 वाली नहीं, 150-60 वाली पिच है.
So they could have done slightly better. For batting order, I'm not a fan of having Ashwin come ahead of Riyan Parag, because Riyan Parag, we saw कि एक 50 जब उन्होंने बनाया था, he came relatively early, 12-13 ओवर हुए थे, तो काफी स्ट्रेंज मुझे थोड़ा सा टैक्टिक्स लगा, ऑल्दो अश्विन ने ठीक ठाक किया बैट के साथ, बट जब क्रंच सिचुएशन आया उसमें नहीं बना पाए जो दिग्गज प्लेयर है इनके। जॉस बटलर ने 39 बनाए, सैमसन 14 रन बना के आउट गए, हेटमायर 11 रन पे आउट हुए, एंड 130 was never going to be enough unless Gujarat had a collapse. They almost had to be like 60-70 for 4 or 5, and even then they won games with 180-90 chasing. So this was always going to be two good overs and they would have been home. So I think batting में ही राजस्थान pretty much ये game हार चुकी। बिल्कुल। एंड देखा गया तो they were what 70 for 2 in 9 overs. They were well on course for 170 odd. But Hardik Pandya's captaincy, how impressive has he been? Not bringing Sai Kishore when Butler was there because he knows that he's the weak lane, and he tried to bowl all his trump cards up front and pushed for wickets. And we all saw the benefit of getting the wickets from what could have been a 170 score or even 150, 139 all out. So हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी के बारे में बताइए। हार्दिक पांड्या द बॉलर pretty much उन्होंने मैच जिता दिया। He got Samson out when Samson was just itching to go after the bowling। फिर उसके बाद बटलर को उन्होंने आउट किया और अपने लास्ट बॉल से हेटमायर को आउट किया। pretty much इन तीनों को जिसने भी आउट कर दे अंडर 20-30 रन, आई थिंक द गेम इज डन फॉर देम। सो 17 रन, 3 विकेट, 4 ओवर में सुपर बॉलिंग, एब्सोल्युटली सुपर बॉलिंग। कैप्टनसी हाँ उन्होंने कुछ ट्राई भी डिफरेंट किया। साई किशोर को उन्होंने 16वें ओवर में लाया, then he got him to bowl 18th over as well, which is quite brave, I would think. Although ठीक है कि जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थे वो आउट हो गए थे, but quite a brave decision, which tells you, I think he probably went by instinct as well rather than just relying on stats etc., which maybe Rajasthan did when they went out to defend the total, because अगर opposite side में आप देखें तो 8 ओवर में 38 रन थे, 2 विकेट थे। I thought 12 overs and almost 100 runs, Rajasthan काफी टक्कर देगी, but because there were two right-handers, they got Ashwin delayed and delayed and delayed, and eventually when he came on to bowl, एक तो कैप्टन अगर कॉन्फिडेंस आपको नहीं दे रहा, he came on to bowl, he went for few runs, 15-16, and that was pretty much the game. तो काफी कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल कैप्टनसी की आपको दिखी, बट जो बॉलिंग थी हार्दिक पांड्या की, इट्स सुपर्ब साइंस फॉर इंडियन क्रिकेट, और होपफुली वो आगे इंजर्ड नहीं होंगे, बिकॉज वर्ल्ड कप पे अब इन फॉर्म बॉलिंग फ्रॉम हार्दिक पांड्या, उनकी बैटिंग तो हम जानते हैं वो फिनिशर या मिडिल ऑर्डर में कैसी बैटिंग करते हैं, तो वेरी इंप्रेसिव। और जॉस बटलर का परफॉर्मेंस 17 games, 863 runs with an average of 57, 149 strike rate, 400s and 450s, Sanjay. What a player. He breached David Warner for sure. Of course, Virat Kohli ka score, I don't think it is going to get beaten up in the next couple of years also. But what on Josh Butler, I think he tried hard and eventually, all burden fell on him. Somebody else had to step up tonight in Rajasthan. बिल्कुल, I think in the past when he's had similar sort of an innings, he's had at least someone to at the other end who keeps going, या तो जयसवाल हो या फिर सैमसन, कभी कभार हेटमायर ने भी ठीक ठाक किया है, तो आई थिंक there's too much pressure on him to get those runs, और suddenly जब हार्दिक पांड्या आए तो they thought this will be a release for Rajasthan, but Hardik Pandya was a different bowler together. वो अच्छे बॉल डाल रहे थे, he did not go for any runs, and that pretty much killed the game. But Josh Butler, the batter, superb innings and superb IPL for him. दोनों ऑरेंज और पर्पल कैप राजस्थान को मिले, बट दे डू नॉट हैव अ ट्रॉफी for those to show for the fans, but I mean इससे बढ़िया सीजन तो नहीं हो सकता। हाँ, और एक और चीज जो काफी टॉपिक इज पिकिंग अप मोमेंटम की, अगर गुजरात टाइटंस का देखा जाए, उनका नंबर 3 बैट्समैन, they never performed. They had Vijay Shankar. Lot of times they used Abhinav Manohar. They using Matthew Wade. So what did they do that they stood out entire tournament, whereas other teams had pretty strong top 3, top 4, whereas Gujarat Titans probably had one or two players in the batting performing. Mostly it was bowling. So what do you think was the differentiator for them to win the title? Just a handy पूछ रहे हैं.
एक तो उनकी बॉलिंग काफी स्ट्रांग थी बिकॉज यू हैड राशिद खान pretty much 4 overs बैंक. उसके बाद यू हैड लॉकी फर्गसन, शमी जो बहुत ही अच्छा पूरे सीजन परफॉर्म किए. एंड बैटिंग, यू आर राइट, इनके पास कोई बटलर नहीं है, कोई केएल राहुल नहीं है, कोई डेविड वार्नर नहीं है, बट कंसिस्टेंटली यू वुड हैव समवन और द अदर विनिंग द गेम फॉर यू. रिद्धिमान साहा ने गेम्स जिताए हैं, शुभमन गिल ने गेम्स जिताए हैं. ऐसे वेड एक थे जो इन एंड आउट थे और उन्होंने कभी एक गेम नहीं जीता. हार्दिक पांड्या ने 3-4 बहुत अच्छी पारियां खेली. राहुल तेवतिया ने गेम्स जिताए. डेविड मिलर्स ने काफी गेम जिताए. इवन राशिद खान ने गेम जिताए. तो आई थिंक एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम यू हैड डिफरेंट प्लेयर्स स्टेपिंग अप एंड पुटिंग द हैंड्स अप. यू कैन इजीली, सो उन्होंने वो कितने 20 पॉइंट पे एंड किए ड्यूरिंग द लीग फेज. दे कुड हैव इजीली लॉस्ट 3 गेम्स. जो तेवतिया का जो 2 बॉल में 2 6, generally you would lose that game. जो एसआरएच के साथ था 22 रन, generally you would lose that game. और एक कोई गेम था जो एकदम from a no win situation they came up. So what could have been an average season जहां वो लोग playoff के लिए भी struggle करते, those crucial moments meant that they ended up being in top 2. And in the end, on the day किसी का भी गेम हो सकता है. तो that's what happened. पिछले मैच में अच्छा स्टार्ट मिला था उनको और राजस्थान के साथ चेस कर रहे थे इजीली. 18-16 रन डिफेंड करने के लिए थे राजस्थान के पास और मिलर ने 3 छक्के मारे. सो दोस फ्यू रन्स हियर एंड देयर. पर्पल कैप ऑरेंज कैप से कुछ नहीं होता. टूर्नामेंट आप नहीं जीतते. कोई इसमें कंटेंडर भी नहीं है पर्पल कैप और ऑरेंज कैप के गुजरात में. बट दे वन द टूर्नामेंट व्हिच इज व्हाट मैटर्स. तो इनका आई थिंक स्प्रेड आउट था द रिस्पांसिबिलिटी एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर्स एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम. Bilkul. And I think that's what is the difference. For me, Gujarat Titans, at no point of the tournament, throughout the tournament, we felt they were lucky winning a match. I think they tried hard. And like I said, they bossed the table, which is top of the table, no questions asked, clear cut qualifiers, and then so one sided final. As fans, we probably feel that we should have had a close game, but it's domination of Gujarat Titans, isn't it? Their planning, their execution, playing 11, bringing Lockie Ferguson, who I know wasn't effective, but I think they thought through well. And even for batting, Hardik Pandya was so pissed that he got out because he wanted to finish the game. So that shows that they have fully thought through unit, and this is not a chance taking kind of a game ability. बिल्कुल. लीग फेज में अगर आप टॉप करें तो यू आर डेफिनेटली नॉट लकी टू क्वालिफाई लाइक सम अदर टीम्स. बट हाँ, क्रूशियल, दिस वाज द ओनली नॉकआउट गेम दे प्लेड. और इस गेम में यू वांटेड सम सीनियर प्लेयर टू स्टेप अप. आई मीन फ्रॉम एन आईपीएल पर्सपेक्टिव, हार्दिक पांड्या इज अ लेजेंड. 3-4 टाइटल उन्होंने एमआई के साथ जीती है. राशिद खान ने कोई टाइटल नहीं जीता था. आज उनका भी कसर हो गया पूरा. जॉस बटलर ने कोई टाइटल नहीं जीता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मे बी एक जॉस मुंबई बटलर खेले मुंबई नहीं थे मुंबई इंडियंस के साथ. ही वाज पार्ट ऑफ द स्क्वाड, बट मुंबई इंडियंस हैड वन इट. मुंबई इंडियंस had won. तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव बिग मैच, 3 विकेट उन्होंने ले लिए. रन्स भी उन्होंने अच्छे खासे 30-35 जो बनाए आज, वो हेल्प किया डेफिनेटली. और वो गुस्सा इसलिए थे बिकॉज वो तीसरा रन शुभमन गिल ने लिया नहीं. और शुभमन गिल तो पिछले सीजन भी फाइनल खेले थे. तो उनका रिएक्शन एकदम देखने लायक था जब उन्होंने लास्ट बॉल में 6 मारा. सो ही वुड फील विंडिकेटेड बिकॉज केकेआर ने उनको रिटेन नहीं किया. एंड ही स्टूड अप फॉर देम. ऑल्दो ये तो 130 यू वुड एक्सपेक्ट कि टॉप ऑर्डर में एक भी बंदा अगर चल जाए तो यू वुड विन द गेम. तो आई थिंक हाँ, यू कैन नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम गुजरात. अगेंस्ट ऑल द ऑड्स they've done what a lot of teams couldn't do for years and years. And what about Rajasthan Royals purple cap holder Yuzi Chahal? Only if you could have held on to that Shubman Gill catch, probably he would have given little more chance for them in this game. बिल्कुल बिल्कुल. I think 3 quick wickets at the top would have made this much more interesting than what it ended out to be. बट हाँ, राजस्थान पर्पल कैप तो यूजी चहल जो भी बॉलिंग उन्होंने इस साल किया है, अमेजिंग बॉलिंग. Hopefully this year he'll make it to the Indian team and play for the World Cup as well. I think अश्विन की परफॉर्मेंस थोड़ी ऑन एंड ऑफ थी. सो एज अ स्पिन कॉम्बिनेशन, ऑल्दो अश्विन ने बैटिंग बहुत अच्छी की, बट आई थिंक एज अ बॉलर ही टेपर्ड ऑफ. बीच में थोड़ा अच्छा किए थे, बट ही वाज डूइंग मोर ऑफ अ कंटेनमेंट जॉब. तो राजस्थान रॉयल्स एक तो यूजी चहल और दूसरे बटलर की बदौलत ही pretty much वो थ्रू आउट द सीजन इन्होंने 7-8 जो भी 9 विन्स थे इनके लीग फेजेस में. और उसके बाद
बटलर की बदौलत ही इन्होंने लास्ट मैच जीता, एंड देन आई मीन ऑन द डे कोई भी जीत हार सकता है. सो wasn't quite a tribute to Wani as they would have liked, but Wani would have been very happy to see Rajasthan Royals do so well and at least reach the finals, जो इतने साल बाद पहली बार हुआ उनका. Uh, it was a proper top two making it to the final kind of league, which kind of makes sense the format. Great. We both had a lot of fun covering what 73 odd games, Sanjay. Uh, Sad that we didn't get any super overs, but I think the games were close enough. And if you have teams like Gujarat Titans, I think it is tough for any other teams to put up. But thanks for making time. And any last comments about IPL 2022? Any disappointments or anything you could have seen differently this season? I think from a matches perspective, I think at the end some of the matches were not as close as I would have liked, but the tournament has been phenomenal. I think some people might have lost interest because the fancy teams bowed out much earlier. So pretty much after 60 65 games, Mumbai or CSK तो बाहर निकल गई थी. Rajasthan, LSG, Gujarat, new teams coming in. These are not the fancy teams, so I can understand people may be losing interest, but superb tournament. I think this just shows कि Indian cricket में depth कितनी है, कितने सारे players जो इसी team में आप देखिए गुजरात में Miller is not getting bought in an 8-team tournament. Saha is not getting bought in an 8-team tournament. So many other players जो fringes में थे, साई किशोर को नहीं कोई शायद game time मिलता. Similarly, Mohsin Khan को game time शायद नहीं मिलता, बदोनी को नहीं मिलता. तिलक वर्मा, yes, he would have played, but काफी सारे यंगस्टर्स और जो भी एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी थे जो रिटायर हो जाते हैं या उनको चांसेस नहीं मिलता. 10 टीम के बदौलत तो चांस मिला है. सो देयर इज लॉट ऑफ डेप्थ इन इंडियन क्रिकेट, एंड आई थिंक द नेक्स्ट ईयर होपफुली जब होम एंड अवे वाला फॉर्मेट आएगा तो आई थिंक यू विल सी मच मोर टाइटर कंपटीशन. सीएसके और मुंबई जैसी टीम्स जो प्रीटी मच साथ में से 6 तो आराम से ही जीत जाती थी वानखेड़े और चेपॉक में, तो ये लोग फिर से वापस आएंगे, and I think it will be a phenomenal tournament next year as well. I think I'm very happy and satisfied. पूरा tournament हुआ, कोविड का खतरा 2-3 साल से था, तो people have forgotten about it effectively. 2 महीने बहुत मजे आए. 2 मैचेस मैंने भी देखा, तो I do have some very good memories of it. And we had crowds back at the stadiums, which is what we all want as an IPL fan, as a cricket fan. तो बहुत ही अच्छा tournament रहा, and I think we all look forward in 9-10 months time to have the IPL again. बिल्कुल. और हमारे साथ दिए थे अनिरुद्ध चक्र और एंडी हैंडी, काफी मैचेस में साथ दिया था इन्होंने. थैंक यू वेरी मच. आखिरी क्वेश्चन जाते जाते, अनिरुद्ध का कहना है कि आई स्टिल थिंक लखनऊ इज अ बेटर टीम देन आरआर इन फाइनल्स. जो आरसीबी फैंस भी प्रोबेबली ऐसे ही सोच रहे रहेंगे, बट आई थिंक आरआर डिजर्विंगली went to the finals, or did you have any different of opinion there? अगर आप फाइनल पहुंच रहे तो you've deserved it basically. The only thing I would say is कि हाँ, अगर आप टेबल में कहाँ फिनिश करो, टेबल में भी लखनऊ और राजस्थान were pretty much neck and neck. सिर्फ 15 रन का डिफरेंस था, so no complaints. Rajasthan deserved to go through, although it was more from individual brilliance performance from their key players, but they had a good bowling lineup, very good bowling lineup. Although लखनऊ का टीम थोड़ा डिफरेंट है, but no hard feelings. I'm sure next year we'll have more competition, and hopefully a different winner again next time around. हाँ, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई कि we need a new winner. So finally, you have a new winner. Excellent. So, folks who are supported us, thank you so much. We thoroughly enjoyed bringing the series, and as you know, we will continue to do as long as cricket exists. Whatever shows we have, I think the next is India Ireland coming up, and then there is an England New Zealand tour coming up. So there is lots of cricket coming up. So we will cover that. There is India South Africa T20 series, which also starts soon. So thanks for watching, and if you are around and if you're following our channel, click that like button and tell your family friends to follow us on Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, and click that subscribe button on YouTube. Sanjay, thank you very much. Hard luck, Lucknow Super Giants, and SRH will be back next time. And Gujarat Titans, very, very big congratulations. Thoroughly enjoy. Dry state, so I don't think there is going to be any drinks, I would assume, but still, enjoy the night, and we will see you again next time on another edition of What a Player Retired How Concussion Sub Series. See you, Sanjay. Thank you, guys.